today's compilation video of current affairs. सबसे पहले टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें, दिस इज़ अबाउट द फ्री बीज वर्सेस द पब्लिक वेलफेयर इन्वेस्टमेंट. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस की अगर हम बात करें तो सीजेआई सूर्यकांत ने ये डिस्टिंग्विश किया है दैट देयर इज़ बिटवीन द इर्रेशनल फ्री बीज that is offered to lure the voters and investing in the welfare schemes targeted at the marginalized sections. तो उनमें डिफरेंस है, मतलब ये पॉइंट आउट किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर हम बात करें, वेलफेयर स्कीम्स आर एन ऑब्लिगेशन अंडर द डीपीएसपी. ठीक है. की कंसर्न्स क्या? लैक ऑफ डेडिकेटेड डाइवर्जन ऑफ रेवेन्यू सरप्लस फॉर द डेवलपमेंटल पर्पसेस लाइक द फ्री मेडिकल केयर एंड एजुकेशन फॉर द पुअर. ये फील्ड्स है जिनको पॉइंट आउट किया है सीजेआई सूर्यकांत ने. अब यहाँ पर आपका यूपीएससी के लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दिस इज़ वेलफेयर स्कीम्स विद रिस्पेक्ट टू डीपीएसपी. तो इस पर थोड़ा सा नज़र मार लीजिएगा कि डीपीएसपी से रिलेटेड कौन सी वेलफेयर स्कीम्स हैं. इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो पिटिशंस हाईलाइटेड दैट नेशनल डेप्ट इंक्रीज फ्रॉम 1.5 लाख crore to around rupees 2.5 lakh crore, allegedly exacerbated by the corrupt practice of the Paul-time freebies. Corruption charges and prior sanctions. What is the issue? A split verdict by SC on the validity of Section 17A of the Prevention of Corruption Act, PCA 1988. Section 17A के बारे में बात की जाए तो basically this requires prior approval from the government before initiating an investigation against any public servant for the acts related to official duties. अब arguments for क्या है? So this protects the honest officers from malicious prosecutions and policy paralysis. Arguments against क्या है? Justice Nagarathan has argued that it creates a privileged class and violates Article 14, equality before law. So किस तरीके से ये क्रिएट करता है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. करंट स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो रेफर टू अ लार्जर बेंच फॉर अ कंक्लूसिव डिसीजन. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, दिस इज़ रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशंस डिस्क्रिशन इन इलेक्टोरल रूल्स. सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या आई है? EC's पावर टू ऑर्डर द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स इज़ नॉट अनरेगुलेटेड. प्रिंसिपल क्या है? मस्ट फॉलो द नेचुरल जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स. सो कंसर्न्स रेज हुए थे और द लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज इन द वेस्ट बंगाल्स इलेक्टोरल रोल्स. लीगल नोटिस की अगर हम बात करें, लीगल नोट की, तो सेक्शन 21A ऑफ द RPA, that is the Representation of People Act 1950, gives EC the wide powers, but they must be sustainable under Article 14. Next, this is based on judicial removal and governance, the loophole, and analysis of Article 124 Clause 4 and 124 Clause 5 regarding the removal of judges. Procedures की अगर हम बात करें, requires a majority of total membership of the House and 2/3 of the members present and voting. Now, if we talk about the critical gap, so the speaker has the discretion to admit or refuse the motion for removal, which can be seen as a statutory power rather than legislative one. So this is potentially leading to arbitrariness. Next है आपका इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. AI इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ पब्लिक गुड कंसेप्ट की अगर हम बात करें, शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम AI एप्लीकेशंस टू AI इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूट पावर डेटा सेट्स, GPU क्लस्टर्स. द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क? कंसंट्रेशन रिस्क है, और इसका मेन ये है कि फ्यू ग्लोबल फर्म्स विल बी कंट्रोलिंग द फ्रंटियर मॉडल्स, creating high entry barriers. So what is the India strategy related to it? So this is about leveraging the digital public infrastructure to democratize the access. Initiatives like India AI Mission, National Supercomputing Mission, and AirWatch are these are the इन पे थोड़ा सा मार लीजिएगा क्या
नेक्स्ट है आपका, दिस इज अबाउट द ग्रेट निकोबार राइट्स. Ancestral lands. Placement of the indigenous people from lands they have inhabited since before the 2004 tsunami. International relations के context में Trump's Board of Peace and India stand. US President Trump has inaugurated a Board of Peace in the Davos with 19 countries including Pakistan, Saudi Arabia, UAE in the rival of the UN. And India's position क्या है? India was absent. India is yet to make a call, reflecting a cautious approach to Trump's new unilateralism. Key development: announcement of the Rafah border crossing opening between the Gaza and Egypt. The Greenland issue and NATO's future. US ambition क्या है? Danish territory for its strategic location, Northern Sea route and rare earth materials is the US ambition. Impact क्या पड़ेगा? Testing Article 5 collective defense. If the US uses coercion against NATO member Denmark, it could signal the end of the alliance foundational trust. Russia or China factor, both are increasing